Right. So basically, balance of payment macro के अंदर एक account बनता है. We're going to talk about the definitions and all. But to explain, basically, this is what goes on. You have a country, Pakistan, and obviously, Pakistan is involved in trade with other countries in the world. Okay. Not only they're involved in the trade, but there are other transactions like investments and, people go abroad, they go overseas for work. There's various reasons through which पाकिस्तानी इकोनॉमी जो है बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होती है. So in our case over here, let's say कि पाकिस्तान के साथ कुछ inflows हैं which are mentioned in the blue, which basically you're going to follow the money. So some money is coming in, while we can see that some money is going out also. Maybe we're trading with the US or with the UK. So इस तरीके से the money is coming in and going out. Obviously, for a country, they want to make sure that what is going on with the money coming in and going out, किस वजह से कितना, just to keep track of things. ठीक है. तो इस कीपिंग ट्रैक को बेसिकली आप बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट कहते हैं. ठीक है. सो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, यूजुअली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द रेजिडेंट्स with the rest of the world, with the non-residents, right? ये यूजुअली जो है हम पाकिस्तान में चलाते हैं तो हम रुपये में करते हैं, लेकिन क्योंकि एक इंटरनेशनल करेंसी है डॉलर्स, तो फिर हम डॉलर्स में भी उसका कन्वर्जन कर लेते हैं. बट मेनली द आइडिया है कि ये रुपीस में होना चाहिए. So the important things to look over here is that anytime the money is coming into the system, anytime the money is coming inflow, so follow the money, not the goods. Anytime the money is coming into the system, तो हम कहते हैं कि यार ये तो एक इनफ्लो क्रिएट हुआ है, और इनफ्लो को हम रिकॉर्ड करते हैं एज अ क्रेडिट एंट्री. ठीक है. सो आई एम गोना राइट ओवर हियर इट्स रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट एंट्री. ठीक है. क्रेडिट एंट्री का मतलब ये होता है कि हम इसको एक पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करते हैं अपने हिसाब के अंदर. we're going to add the numbers, so it is treated as a positive value. But anytime the money goes out of the system, तो फिर हम उसको ट्रीट करते हैं एज अ डेबिट एंट्री. ठीक है. And it is recorded as a negative. We're going to be minusing it from our statements, right? So negative value consider करेंगे हम इसको, right? Negative value. So इस तरह से this sort of like starts our first idea कि होता क्या है. ठीक है. अब करंट अकाउंट, बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर there are three main accounts. For your exam purpose, only current account is of relevance. Okay. But I would still like to mention what the other two accounts are. एक अकाउंट होता है हमारा कैपिटल अकाउंट, एक अकाउंट होता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंट. ठीक है. करंट अकाउंट के अंदर बेसिकली you're taking all the things like goods and services का आना और जाना, inflows and outflows resulting from exports and import of goods and services. ओके. फिर साथ में एक चीज होती है जिसको आप, हम तो यहाँ पे इनकम्स लिख रहे हैं, कई जगहों पे हम इसको इनकम्स लिखते हैं, बट इट्स प्राइमरी इनकम. नाउ वी कॉल इट प्राइमरी इनकम. एंड यू हैव ट्रांसफर पेमेंट्स, इसको हम सेकेंडरी इनकम का नाम देंगे, एंड वी गोना एक्सप्लेन इट थ्रू दैट इन जस्ट अ मोमेंट. उसके बाद जस्ट टू गिव अ क्विक ब्रीफ ऑन कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स बट इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके अंदर आप की ट्रांजैक्शंस जाती हैं. लाइक फॉर एग्जांपल आपने कोई पेटेंट्स खरीदे किसी कंपनीज के अब्रॉड, या कोई राइट्स खरीद लिए, या कोई पाकिस्तानी
मूव कर जाता है कनाडा, तो वो यहाँ पाकिस्तान से अपने एसेट्स को सेल करके फॉरेन इकोनॉमी में मूव कर जाता है, या कोई पाकिस्तान मूव कर जाता है वापस से कोई ओवरसी पाकिस्तानी, तो वो जब पैसे लेकर आता है तो दैट्स ऑल कैपिटल अकाउंट। इवन अगर हम पे लोन माफ हो जाए, राइट, तो वो भी इसके अंदर रिकॉर्ड होता है। एंड देन यू हैव द फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट बेसिकली कोई कैपिटल एसेट्स हैं जिसके बदले में आप कोई इन्वेस्टमेंट, सॉर्ट ऑफ लाइक इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, उसको आप डायरेक्ट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हो। कुछ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, एफडीआई, कभी सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के। रिको डेक के अंदर कंपनीज पैसे लेकर आती हैं और रिको डेक के अंदर माइनिंग बिजनेस जॉइंट वेंचर्स करती हैं। तो इस किस्म की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो फाइनेंशियल अकाउंट्स में जाती हैं, ठीक है। बट अगेन द फोकस इज कि हमारा जो करंट अकाउंट है उसको हम कैसे डील करेंगे। बाय द वे, इफ यू नोटिस राइट एट द बॉटम इट आल्सो सेज कि ऑफिशियल फॉरेन करेंसी रिजर्व अकाउंट एंड बैलेंसिंग आइटम भी एक चीज होती है। I'll give you a very short brief on that. ये usually it's part of the financial account, the currency reserve. Okay, so let's talk about the next step. जब हम करंट अकाउंट बनाएंगे, तो करंट अकाउंट ऑब्वियसली उसके अंदर वी नीड टू लर्न how the transactions are made. Would you be required to make the current account? No. But would you be required to do some calculations as to how the numbers have been derived? Yes. Okay. तो और स्पेशली जब तुम पुराने कोई एमसीक्यूज वगैरह कर रहे होगे जिसमें पहले तो कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट। तो व्हाट वी गोइंग टू डू इज मैं तुमको इतना कैपिटल और फाइनेंशियल भी कवर करा देता हूँ कि एटलीस्ट वो पुराने एमसीक्यूज विल बी एबल टू डू जस्ट एडेड इंफॉर्मेशन अ लिटिल। सो वी सेड करंट अकाउंट के अंदर मेनली चार अकाउंट होते हैं। एक, गुड्स एंड सर्विसेज की जो ट्रेडिंग होती है, ठीक है। गुड्स के लिए यू विल कम अक्रॉस समटाइम्स दे गोइंग टू यूज द वर्ड विजिबल, tangible, visible, and services के लिए they might use the word invisible. In the MCQs, we've definitely seen these. So it's important for you to know कि visible और invisible के अंदर क्या फर्क होता है। Visible is obviously those tangible goods like TV, cars, you can see, you can touch them. So if you're doing an export of this, जैसे t-shirt, that's a good. When you export it, the good goes out, but the money comes in. Let's call it an inflow. So when we trade goods and goods, the money comes in, let's say 35 million rupees or something. But when you import some goods from abroad, like mobile phones and all, yeah, so the money goes out, let's say 20, ठीक है। तो आपने क्या करना है, द मनी कमिंग इन माइनस द मनी गोइंग आउट इन गुड्स, तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी इसको हम कहेंगे ट्रेड इन गुड्स। कितनी वैल्यू का है, +15 की वैल्यू का हमारे पास ट्रेड इन गुड्स आ रहा है। ओके। फिर उसके बाद सर्विसेज है। फॉर एग्जांपल, कोई फॉरेनर पाकिस्तान आता है, कद्दू आता है, नॉर्दर्न पाकिस्तान आता है फॉर ट्रैवलिंग पर्पस, so that's a tourism export that we've done, because follow the money, right? Anytime you confuse, like for example, if a Pakistani is going abroad to study, तो ये export है कि import है, right? So you follow the money. When Pakistani goes abroad to study, they take the money with them. So import में the money is going out, right? So we're importing a service. So इस तरीके से you will make sense of it. So if you're exporting a service like banking and insurance and maybe like logistics, so that will be considered as an inflow. So let me give a value, say +10. So money is coming in by +10 million. And if you are importing, the money is going to go out. Um, so let's say it's an outflow of
minus 15. इसको जब हम नेट करेंगे तो यू गोइंग टू एंड अप विद समथिंग कॉल्ड ट्रेड इन सर्विस। ये हो गए हमारे दो अकाउंट्स, एक में सरप्लस आ रहा है, तो इफ द वैल्यू इज पॉजिटिव, यानी अगर इफ एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, you're going to have a surplus. But on the other hand, if x is less than m, so we're going to call it um, a deficit. ठीक हो गया? So that's how this will be recorded. Normally, what they're going to also test you on is कि अगर हम trade in goods और trade in service की value को मिला लें, क्योंकि usually remember we say export and import of goods and services, so we combine them, right? There's a name for that. It's called trade in balance. Okay, that's what it's called. तो यहाँ पे हमारे पास +10 का, यानी ट्रेड इन बैलेंस में सरप्लस आ रहा है, which is a net effect of trade in good and trade in service. ठीक हो गया? उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट अकाउंट आता है, हम उसको कहते हैं, कई जगहों के ऊपर यू विल कम अक्रॉस देम कॉलिंग इट नेट इनकम, खासतौर पे पुराने एमसीक्यूज में. But now you're going to see more often in the newer books and marking scheme that they will call it primary income. Okay? तो प्राइमरी इनकम बेसिकली है क्या? ओके, तो यूजली प्राइमरी इनकम्स के अंदर ज्यादातर जो टर्म्स यूज होते हैं कि कोई इंटरेस्ट की पेमेंट्स आ रही हो या जा रही हो, ठीक है, या किसी किस्म का प्रॉफिट ऑन एन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, ऑन अ बिजनेस अब्रॉड, या किसी स्टॉक्स के अंदर से कोई डिविडेंड आ रहा हो या डिविडेंड जा रहा हो, तो these are usually recorded. Obviously, these are on investments जो कि फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड हुई होंगी, कि बाहर से रिकॉर्डिंग के ऊपर आया है. तो इंटरेस्ट पेमेंट्स, प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स, ये सब ऑन इन्वेस्टमेंट्स, एंड even loans are investments, right? So even loans would be considered as one of these. ठीक हो गया? सो इसके सर अंदर रेंट भी हो एक, सकते हैं ना? इसके अंदर एक और चीज भी हो सकती है, इसमें रेंट भी हो सकता है. इसके अंदर इवन जो आजकल थोड़ा सा आ रहा है, लेट मी गिव द एग्जैक्ट वर्ड, दे कॉलिंग इट एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन. ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट प्लीज इसके डायनामिक्स जरूर देखना, इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा क्लोजली देखना. ये कौन सी एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन की बात हो रही है? सो बेसिकली एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन क्या होता है कि एक रेजिडेंट है, पाकिस्तानी रेजिडेंट है, जो फॉरेन इकोनॉमी के अंदर गया है, ठीक है, फॉरेन इकोनॉमी के लोगों ने उसको इनकम पे की है फॉर वट एवर गुड और सर्विस. ओके, and this individual who's earned, remember, is a resident of the country from which he's gone abroad, right? तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, ये रेजिडेंट का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रेजिडेंट का वर्ड इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ हिंट कि ये प्राइमरी के अंदर जाएगा कि सेकेंडरी के अंदर जाएगा. सही है? तो लिखते हैं, इट इज wages earned by a country's resident working in another country. ठीक है? And so they are even paid for by the foreign country, कि आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की है, इसीलिए it's called an employees compensation. But the guy is not a resident of the foreign country, right?
अगर एक बंदा जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तानी है, ये इसमें क्या आएगा, एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन में, ये जो हमारे पाकिस्तानी कतर वगैरह जाते हैं और वहाँ नौकरी करते हैं, दे रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तानी, they're there on work permit, they build stadiums, they get paid for by the Saudis or the Middle Eastern, and then they bring the money back to Pakistan or whatever. तो ये तुम्हारा जो है प्राइमरी इनकम्स के अंदर आता है. So if it is an inflow, we will record it. If the money is coming in, it's an inflow. If the money is going out, it's an outflow. So let's say the money coming in is 5, the money going out is 3. तो आपके पास जो प्राइमरी इनकम्स है, जो नेट प्राइमरी इनकम्स है, वो हो जाता है +2 का. ठीक हो गया. तो ये हमारी प्राइमरी इनकम हो जाती है. फिर उसके बाद हमारे पास आती है समथिंग कॉल्ड अ सेकेंडरी इनकम, जो पुराने के हिसाब से दे विल कॉल इट करंट नेट, सॉरी, करंट ट्रांसफर पेमेंट्स. ओके. तो पुराने टर्म्स के अंदर इट वाज कॉल्ड दैट, बट आजकल हम इसको सेकेंडरी इनकम कहते हैं. ये बेसिकली वो पैसा है जिसके बदले में आपने कोई 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 गुड या सर्विस ना प्रोड्यूस की है, ना कोई एक्सचेंज हुआ है ऑफ दैट सॉर्ट. You've been given money in the sense of कोई फॉरेन एड है, कोई गिफ्ट है, कोई चैरिटी है, स्टफ लाइक दैट. सो इसके अंदर जो कंसिडरेशन होती है, वो सॉर्ट ऑफ हम कहते हैं कि ये कुछ एड चैरिटी इस तरह की चीज है. फ्री मनी इज बीइंग कमिंग इन. डोनेशन भी जा सकता है, चैरिटी भी जा सकती है, लेकिन इसमें समथिंग कॉल्ड द रेमिटेंस भी जा सकता है. अब यहाँ पे एक फर्क क्रिएट करते हैं कि रेमिटेंस क्या है इसके अंदर. तो हम कहते हैं दिस इज अ ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम पीपल वर्किंग इन अ फॉरेन कंट्री फॉर अ ईयर और मोर बैक टू देयर रिलेटिव्स एट होम. नॉर्मली इसके अंदर बंदा बाहर मूव कर चुका है, यूजुअली इज नॉट अ रेजिडेंट ऑफ द लोकल कंट्री एनी मोर, बट दे आर सेंडिंग इन द मनी टू द फैमिलीज ओवर हियर और रिलेटिव्स ओवर हियर. क्योंकि हर किसी का रिलेटिव तो नहीं मूव हो जाता ना, यूजुअली आपकी इमीडिएट फैमिली मूव हो जाती है, मियाँ बीवी बच्चे, एंड देन दे आर सेंडिंग मनी टू देयर हाउस होल्ड विद मम्स एंड डैड्स एंड ऑल. तो ये वो वाला है. सो इसके अंदर आपकी रेमिटेंसेस आ जाती हैं. सो द की वर्ड मेरे ख्याल में जो एमसीक्यू के अंदर विच कैन रियली हेल्प यू इज दिस टर्मिनोलॉजी ऑफ रेजिडेंट. इफ इट्स अ रेजिडेंट who's working abroad, तो primary income. But if they don't mention that and they're sending just they're living there for more than a year or so, and they're sending the money to their families, तो फिर इसको आप remittance करोगे. For many countries like Philippines and Pakistan, we highly are reliant on the secondary incomes. It helps our current account. ठीक है. इसके बाद क्या लिखा है? So aid, donation, charity, remittance. ठीक है. बल्कि इनफैक्ट लेट्स राइट अबाउट द रेमिटेंस ऑल्सो, कि ये रेमिटेंस है क्या. So let's write, this is the transfer of money from people working in foreign country for a year or more to their relatives at home.
So this would be our idea. If the money is coming in, it would be recorded as an inflow. And if the money is going out, it will be recorded as an outflow. So agar main likhun, so this is how we're going to write it. Um, let's say there's a plus 10 coming in, minus 2 is going out. So you have a secondary income के अंदर +8. ठीक, so this is what we have. ये हमारे 4 accounts हैं. You need to know them really really well. if अगर वो कहते हैं कि आपका करंट अकाउंट बैलेंस कैसा है, इफ देर आस्किंग यू कि करंट अकाउंट बैलेंस कैसा है, आपको पता है आपने 4 चीजों को मिला लेना है. इट इज ट्रेड इन गुड्स, यू ऐड ट्रेड इन सर्विस या इनविजिबल, देन यू गोइंग टू ऐड प्राइमरी इनकम की जो भी वैल्यू आ रही है प्लस माइनस, एंड इन दैट यू गोइंग टू ऐड सेकेंडरी इनकम एंड यू टोटल इट अप. कितना बनेगा? +10 था ट्रेड इन गुड्स, +2 नहीं, ट्रेड इन बैलेंस. एक सेकेंड, let me go up and see. So sorry, my bad. So ऊपर लिखा है +15 -5 +2 +8, total it up and we get 20. Okay, so it's a +20 that we have. तो ये जो +20 है, इसको हम, क्योंकि इनफ्लो ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट्स अ प्लस, so we can call it, we have a current account surplus. अगर ये नेगेटिव होता तो we would have said current account deficit. So current account surplus आ रहा है. That's a positive thing usually, current account, because remember balance of payments में हमने कहा 3 accounts हैं. You have the current account, the capital account, the financial account. Capital account is usually the smallest one. ठीक है. फिर करंट अकाउंट इज यूजुअली द लार्जेस्ट वन. ठीक है. करंट अकाउंट अगर प्लस में है तो मोस्ट लाइकली आपका पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट प्लस में होगा. ठीक है. करंट अकाउंट के अंदर भी ये जो 4 अकाउंट्स हैं, इन 4 अकाउंट्स में से यूजुअली ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विस इज अ हैवी वन. ओके, दीज आर यूजुअली द हैवी अकाउंट्स, ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज. लेकिन समटाइम्स लाइक कंट्रीज लाइक अस, हमारा सेकेंडरी इनकम भी काफी हैवी होता है और प्राइमरी भी काफी हैवी होता है. गुड्स से ज्यादा हमारे पास रेमिटेंसेस आते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी के पैसे आते हैं, तो वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पाकिस्तानी अकाउंट्स के अंदर. ठीक है. सो बेसिकली दैट्स व्हाट दिस इज ऑल अबाउट. इसकी कैलकुलेशंस का ख्याल करना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके आप वैल्यूज निकालते हो, and this is how it basically goes. Okay, I've already explained you what the capital account and the financial account and all of this is. You won't be needing to add and figure out the whole value, so I'm going to skip on a few things over here. And क्योंकि अब तुमको एक अंदाजा हो गया है कि करंट अकाउंट के अंदर जो है, basically we have three things, right? All the things that I've skipped is basically not relevant completely because उसमें capital और financial के discussions आ रहे हैं. As long as you know कि overall calculations के अंदर current plus capital plus financial कर लोगे तो balance of payment का हिसाब आ जाएगा. All you have to do is inflows are credit plus outflows are negative deficit. अब जो एसेट बनते हैं वो यूजुअली इट्स गोइंग टू बी अबाउट कि ये बताएं कि ये जो करंट अकाउंट के अंदर आपके पास इम्बैलेंसेस आते हैं. इम्बैलेंसेस का मतलब क्या होता है
कि sometimes you may have a surplus and sometimes you may have a deficit. Both surplus, बेशक हम कहते हैं surplus is more positive than negative, but surplus and deficit, both of them are considered an imbalance. ठीक है? Balance of payment would be in the current account के you have inflow equals to outflow. Okay? But that would be highly improbable. Usually, economies are either in a surplus or in a deficit. Okay? As we know, surplus means there's more money coming in than going out, and deficit means that there's more money going out than coming in. Okay? They're asking now, they're sort of like talking about, Kiji, let's discuss the causes. Why do you have more outflows than inflows, right? So I'll mention over here, because since we're doing deficit, we're saying inflows are less and outflows are more. But when you're doing this, please, क्योंकि हम current account की बात कर रहे हैं, so don't forget that our focus is कि current account के अंदर अगर deficit आ रहा है, तो it's probably because one of these four things, right? Because current account में तो चार accounts है. You have the trade in goods and trade in service, you have the primary income, and you have the secondary income, right? तो वजह तो ये चार चीजों के accounts हैं जिसके अंदर you might have more money going out than basically coming in. ठीक है? तो what can cause more money to go out than come in? पहला reason they're suggesting is कि if you have a growing domestic economy, that will actually cause a deficit in your economy. Now that's strange. If Pakistani economy is growing, why would we have a deficit? So हम ये कह रहे हैं कि when Pakistani economy is growing, what we would expect that's going to happen is कि हमारा output increase होना चाहिए, right? If our economy is growing, we're experiencing economic growth. तो हमारा output बढ़ रहा है. और output बना कैसे? So obviously you have to buy raw materials and even machines from abroad because maybe your local economy does not have those technologies or resources, or maybe you don't have enough quantities. So you're obviously importing stuff. ठीक है? So when you're doing that, so as well as import expenditures increasing, export revenue may actually decline वो कह रहे हैं because what is happening is because your economy is doing well, तो जो चीजें बाहर जा सकती थी वो अब domestic market के अंदर ही consume हो रही है because you know economic growth is happening, incomes are rising, so Pakistanis are saying we want consumption, right? We want to consume stuff, so don't send it abroad. We're going to buy these goods locally because people are earning. So we say that this cause of a current account deficit is not likely to be considered a problem. Okay, it's not problem. It is also likely to be short term and to be self-correcting. इसका क्या मतलब हुआ self-correcting? ये खुद कैसे ठीक हो सकता है? And why isn't the government worried कि हम बाहर से imported चीजें खरीद रहे हैं, right? So the reason why they're saying is it's self-correcting is because as the country's firms use the imported raw material and capital goods to produce more products, they are likely to sell more products both abroad and at home, so revenue can actually go up. Ab suno, when our Pakistani economy is growing, people are making good money. Okay? They're expanding the production, investments होती हैं, बाहर से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, वो रॉ मटेरियल को फिर कन्वर्ट करते हैं इनटू प्रॉपर, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से पाकिस्तान में इनफ जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, textile industries want to produce more textiles, but Pakistan ki cotton is not enough, so they import cotton and machines. They make they take those cottons, convert it into dhaga and threads, and they produce garments out of it, a high value item.
and they consume it locally also and they export it also. तो ये जो इंपोर्ट हो रहा था, ये जो खर्चा हो रहा था इंपोर्ट रॉ मटेरियल का, टर्न्स आउट कि फिर हम उसको एक्सपोर्ट करके हाई वैल्यू के ऊपर बेसिकली वी वर ब्रिंगिंग इन द मनी बैक इनटू द कंट्री. तो ऐसे सिनेरियो के अंदर दे से द गवर्नमेंट इज नॉट सो वरीड बिकॉज दे नो कि आज नहीं तो बाद में ये पैसे वापस इकोनॉमी के अंदर आना शुरू हो जाए. Okay, so that's one reason for you to have a current account deficit. And if you notice, ये ज़्यादा trade in goods or trade in services ज़्यादा linked है ये reason. Secondly, we can even say one of the reasons why you have a deficit is because जो आपके trading partners हैं, जैसे पाकिस्तान के जो अच्छे trading partners हैं, it's Europe and it is um, US. So we're selling a lot of textile goods to these people. Now, just imagine if these economies are going through economic slowdown and trouble and their incomes are falling. So, what will happen as a result? Well, they won't be interested in buying our goods and they will reduce their import. ऐसे ही होगा. तो उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट बेसिकली हर्ट हो जाएंगे. So a current account deficit that arises from either change in the economic cycle of the domestic economy or the economies of trading partners is usually referred to as a cyclical deficit. You remember we recently did those economic cycles in which the economy goes up and down and up and down like this. तो ये उससे कनेक्ट कर रहे हैं कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज डाउन है तो ऑब्वियसली इट इज cyclical. The foreign countries either going in a recession or we're going in a recession. तो इसकी वजह से अगर हमारे पास डेफिसिट है, ठीक है, तो ये भी कोई ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम कंसिडर नहीं किया जा रहा. ओके, इट इज नॉट कंसिडर्ड अ प्रॉब्लम अगेन cause ये शॉर्ट टर्म है एंड सेल्फ करेक्टिंग है. इकोनॉमी इज गोइंग टू फिक्स इट सेल्फ एंड दिस प्रॉब्लम विल गो अवे. तो हमने दो रीजंस बताए कि अगर करंट अकाउंट में खास तौर पे ट्रेड इन गुड्स और सर्विसेज के अंदर इफ यू हैव अ डेफिसिट because the trading partners are not doing well or we have a cyclical deficit or if our economy is growing, तो ये issue नहीं है. They will sort it out. The problem that we really have is the structural one. We have some structural problems. ये जो होते हैं ये थोड़े से ज्यादा लॉन्ग रन एंड मोर ऑफ अ कंसर्न होते हैं. इसमें हो ये रहा होता है कि बेसिकली एक कंट्री अपनी इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस लूज कर रही होती है वक्त के साथ. या तो उनके पास अच्छा लेबर या कैपिटल प्रोडक्टिविटी नहीं होती है जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर दे नॉट पार्ट ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन. So the new thing is AI, and now manufacturing will be transferred to AI technology. All companies who will adopt AI from making garments to food, AI is going to help and manage a lot of things. The countries who will not factor in these changes, उनको बड़े problems होंगे. And that problem is more of a structural. You won't have good education and you'll have not good trainings, ना खास कोई इन्वेस्टमेंट आएंगी, ना कोई आप कोई खास इनोवेशन कर रहे होगे. This type of a deficit would be considered problematic, okay, and that needs to be sort of sorted out. तो ये हमारी कुछ चीजें हैं कि अगर आपके करंट अकाउंट के अंदर ये डेफिसिट्स इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग इट, it is problematic. What I'm just explaining you right now is from Colin Bamford's book, and he's talked about these three reasons. There are plenty more, honestly. You can have current account deficit and surplus. Something as simple as, how हमारी अगर foreign currency value अगर surplus में चली जाती है, सॉरी कह रहा हूँ, अप्रिशिएट हो जाती है, तो आपको पता है
कि अगर पाकिस्तानी रुपया अप्रिशिएट हो जाता है तो द फॉरेनर वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन बाइंग पाकिस्तानी गुड्स, राइट? तो उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट हर्ट हो जाएंगे एंड देन ट्रेड इन बैलेंस हर्ट हो जाएगा, right? We won't be able to export enough, so trade in goods will get suffer, and so the current account is going to suffer, right? So reasons बहुत सारे हैं, okay, but I wanted to mainly focus on जो Bamford की idea है, and I've told you Bamford's importance in the marking scheme and Cambridge, right? So that. Then on the next page, we're saying surpluses के क्या cause हो सकते हैं? So let's remind ourselves one more time. When do we have a surplus? It's an imbalance. When your inflows are greater than your outflows. Again, चार accounts हैं. Trade in goods, trade in service, net income, net transfers. तो सेम वही तीन reasons हमने लिए हैं. Okay? We have if the economy, sorry, my bad. If the economy, domestic economy is declining, we're going in a recession. Incomes are falling. So Pakistanis क्या करेंगे? They're going to buy fewer goods and services. Okay? Domestically and internationally. So when we're not buying foreign goods, our imports will fall. और जो हमारे domestic goods हैं, they people are not buying that also. So maybe the companies will find a way out. तो उसकी वजह से हमारे exports will improve. That's what we're experiencing over here. फिर उसके बाद अगर हमारे trading partners are doing really well, they're making good amount of money, they want to buy goods and services from us, they want to use our resources also. You know, Pakistani लोगों को, they want to hire Pakistani people. तो ये primary incomes के अंदर you will have an experience of an increase and migration will happen. You know how that it is. So if foreign economies are doing well, they need workers, and so they, get people from all over the world to come into their country. तो प्राइमरी इनकम्स के अंदर भी इंक्रीज आ सकता है, और सेकेंडरी इनकम के अंदर भी इंक्रीज आ सकता है व्हेन दे डू माइग्रेशन. सही, तो ये हमारा एक रीजन हो गया. एंड देन यू हैव द स्ट्रक्चरल रीजन कि अगर पाकिस्तानी इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही है, एआई को अडॉप्ट करती है, तो ऑब्वियसली हमारे पास बड़े अच्छे लोग होते हैं जो एजुकेटेड होते हैं, ट्रेंड होते हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, इनोवेशंस आती हैं. We're making good stuff, we're selling it abroad at competitive prices. So you know what it'll do, it'll create a surplus in our account, and that's going to be a very favorable thing for us. सही. तो ये हमारा sort of, please, when you're doing your answers, don't do vice versa. Vice versa is your enemy. Um, there's no such thing as vice versa. It doesn't mean anything. ठीक हो गया? तो please, please, please ख्याल करना इसका. You talk about both sides. बेशक ये points you might feel कि यार मैं इसका opposite ही तो बता रहा हूँ, but does not matter. Make sure that you do that. फिर देखें जी, वंस वी नो कि किस वजह से हमारे पास ये आता है करंट अकाउंट सरप्लस और डेफिसिट, वी मस्ट टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट. इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है ऑन द करंट इकोनॉमी? ठीक है. तो व्हेन वी स्पीक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स या जो भी उसके इफेक्ट आते हैं, तो एक तो देखो, if current account has a surplus, when current account has a surplus, what we know is more money is coming into the system than going out of the system. If you remember circular flow of income, if more money is coming in than going out, obviously that's a positive thing for your circular flow of income, right? So it's going to benefit our economy. Our economy is going to grow. ठीक है. It will even send a positive signal abroad.
कि ये एक बड़ी अच्छी इकोनॉमी है, दिस एक्सपोर्ट अ लॉट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, so let's bring our money into this economy and let's invest in this economy. And that will generate employment more further, and एक country को एक बड़ी अच्छा सा इमेज और एक अच्छा सा पर्सपेक्टिव भी देगा. ठीक है. So that would be considered a positive thing. In fact, from Bamford only, let me take a picture and upload कि Bamford की let's take उसकी एक consequences की list, what they are mentioning, and then I will suggest a few more with it. ठीक है, तो just bear with me for a second. Uh, all right. So, from Bamford's point of view, the consequences of imbalances, obviously, हमें दोनों तरीके से देखने हैं, current account deficit and surpluses. Now, देखो, we might be going through a deficit. More money is going out than coming in, which we might consider that it's not a very positive thing for us, right? So the more money is going out of the country. लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर ये ग्रोइंग इकोनॉमी की वजह से हो रही है, तो इसका पॉजिटिव बात तो यह है कि हम डोमेस्टिक गुड्स भी कंज्यूम कर रहे हैं और हम फॉरेन गुड्स भी कंज्यूम कर रहे हैं. रिमेंबर, फॉरेन गुड्स improves our living standard. All that, your mobile phones and branded clothing and branded cars and all branded watches and branded food and all of these things, they improve your living standard, but they come at a cost. The cost is money is going out. तो अगर आपके पास imbalance है, on one side I can say, you know what, the country is consuming more than it is producing. Sometimes it could be even said, this is sometimes referred to as country living beyond its means. This might be a positive thing in terms of consumption, but but it is considered a negative thing in terms of the finance because the money is going out and now the economy does not have the money. So now we have to attract investment into the country. You can see Pakistan's the case, na yaar. पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? We are importing all these land cruisers and all these expensive things, right? So there's a lot of money which is going out as a result of that. The people who might be importing might feel, okay, you know what, we can afford this stuff. ठीक है, तो it's not a bad thing. हम तो afford कर सकते हैं, we're making the payments for it. But overall, the economy experiences that there's more money going out than coming in, and it's shrinking our economy, and it might later on slow the economy down and might create unemployment. तो ये हमारा इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि डेफिसिट इन टर्म्स ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड माइट बी कंसिडर्ड अ पॉजिटिव थिंग because you're importing more, but then it has some long-term implications of us borrowing and then we have to pay the loans back. So that might not be considered a very good thing. फिर जब हम सरप्लस की बात करते हैं तो सरप्लस के भी कुछ बेनिफिट हैं बिकॉज कंट्री इज अर्निंग मोर देन स्पेंडिंग. तो सर्कुलर फ्लो के हिसाब से देयर इज मोर मनी कमिंग इन देन गोइंग आउट, but we're not importing so much. Foreigners are consuming our goods sort of. जब गुल अहमद एक्सपोर्ट करता है कपड़े हैं तो वो पाकिस्तान में कपड़े कम हो जाते हैं, तो पाकिस्तानी सफर इन टर्म्स ऑफ लेसर गुड्स एंड चॉइसेस. Foreigners benefit, but we get the financial incentive of money coming in. Up the high level of demand combined with additions to the money supply may generate inflationary pressure. ये वो demand pull inflation की बात हो रही है कि जब हमारे goods foreigners खरीदेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और जिसकी वजह से एडी बढ़ेगा, and that will cause the price levels to basically rise. ठीक है, तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर अस. तो ये उस हिसाब से भी ठीक बात है. असल के अंदर जो डिस्कशन हमें चाहिए ना, वो चाहिए अबाउट द साइज. दैट वुड बी योर इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट का डिसीजन ऑल्सो.
कि whether current account surplus is a good thing or if it's a bad thing, it actually depends. It depends on the size of the deficit or a surplus, which is of an issue. If you have too much of a surplus, that would mean there's a lot of goods that is going abroad and लोगों के लिए living standards के लिए maybe the goods are not that much. ठीक है? And if you have a very large deficit, that means you need to finance it with a lot of loans, which needs to be paid back. And that's a problematic statement as well. तो ये तो मेरा एक हिस्सा हो गया consequences का एक argument which you should know. Lekin, I'll give you some more if you come on to the next page where, we have some questions over here. कि अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि एक्सपोर्ट बेहतर है कि इंपोर्ट बेहतर है तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? तो हम कहते हैं जी एक्सपोर्ट इज गुड इन टर्म्स ऑफ मनी but it's bad in terms of consumption, right? Goods are going abroad, living standard falling, somebody else is using our resources. When we talk about imports, we say imports तो अच्छा है in terms of living standards, but it's bad in terms of the finance. The money is going out. Imagine if you were a country who had the ability to import goods and services from all over the world for your citizens, and you can just import whatever you want, right? So you would have the best of the best things globally. But the problem is that your economy's money would just go out and out and out. Dubai ko consider kar lo na. Dubai has huge imports of goods and services, right? The amount of goods and the stuff that you see, mostly it's all imported. But that means Dubai is losing a lot of money as a result of all these imports. But the positive thing is that there's a lot of money coming in by those same companies who are selling their stuff. They're investing in Dubai and they're bringing a lot of more money into Dubai than the money going out of Dubai. That's a smart thing. Saudi Arab also has a similar thing that they've been importing a lot of goods and services, but they're selling their one key raw material, which the world demands and wants, which is basically oil. The day the world switches away from oil, then that's a problem for Saudi Arab. So now they realize that problem. Okay, oh, the world is moving away, so we need to come up with an alternative source. So now they're working on tourism and opening up the economy because it's a matter of survival in the long run. Okay? So question number 2 says, what is a trade balance? Do you remember what is a trade balance? We said trade balance is when you combine the value of trade in goods with trade in surplus, right? So this is what it was. अब हम फिर बात करेंगे कि अच्छा जी तो फिर ये कौन से अकाउंट में दिखता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के किस अकाउंट में जाता है? So we know it goes in the current account. Current account is the relevant account for us. फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं? We've talked about it. You have current account, you have कैपिटल अकाउंट जिसके अंदर पेटेंट राइट की बाइंग एंड सेलिंग आ जाती है, यू हैव करंट कैपिटल अकाउंट, एंड फाइनली यू हैव द फाइनेंशियल अकाउंट. ओके जी, इसमें इन्वेस्टमेंट्स वगैरह चली जाती हैं. बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे बैलेंस करता है? नाउ दैट्स अ लिटिल बियॉन्ड योर कोर्स, but the idea here is you take the capital, financial, and current account, you add the values up, ठीक है? And you have a scenario uh, in which you might say कि हो सकता है कि इक्वल आ जाए. So if I was to say कि जो आपका करंट अकाउंट का बैलेंस है, current account balance positive 10, let's say, is offset by capital and financial accounts balance.
capital and financial accounts balances. It just so happens, right? ये एक वजह हो सकती है कि आपका करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो कैपिटल और फाइनेंशियल से बैलेंस हो जाए. But that's not always going to happen. Pakistan का केस, if you know, what happens in Pakistan's case is कि हमारा पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आ रहा होता है. दैट मीन्स ऑल अक्रॉस द थ्री अकाउंट्स जब हम अपना हिसाब लगाते हैं ना, तो होता मसला यह है कि हमारे जो टोटल इनफ्लोज हैं फ्रॉम दीज थ्री अकाउंट्स इज लेस देन द आउटफ्लोज. तो मोर मनी इज गोइंग आउट देन कमिंग इन. इससे क्या होगा? मोर मनी गोइंग आउट मीन्स के रुपये की सप्लाई बढ़ गई है इंटरनेशनल मार्केट में. एंड इनफ्लो का मतलब है कि इंटरनेशनल मार्केट वांट्स पाकिस्तानी रुपया, उसकी डिमांड बढ़ गई है. तो क्योंकि यहाँ डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, आर करेंसी इज लूजिंग वैल्यू, जो पाकिस्तान के केस में होता है अनफॉर्चुनेटली. तो दैट पुट्स द प्रेशर ऑफ पाकिस्तानी करेंसी टू गो डाउन. एंड दैट्स प्रॉब्लमैटिक बिकॉज इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच वी विल टॉक अबाउट इन फॉरेन करेंसी का टॉपिक व्हिच इज नेक्स्ट. तो हमारा मकसद क्या होता है ऐसे सिनेरियो के अंदर? दैट वी नीड आवर करेंसी टू स्टेबलाइज. ये जो सप्लाई इतनी ज्यादा मार्केट में हो गई है, इसको कम करो. लेट्स गो बाय आवर ओन करेंसी फ्रॉम द मार्केट, लेट्स टेक इट आउट. ओके, मगर हाउ विल यू गो एंड बाय? तो ये आप कैसे करते हो? आपके जो वो अभी मैंने बताया था ना, एक रिजर्व अकाउंट होता है. सो यू गो इनटू द फाइनेंशियल मार्केट and you sell your reserve asset. It could be dollars, जो Ishaq Dar used to do to maintain Pakistani rupiah. He would sell off the dollars, or maybe the gold reserves you might have, right? So you're going to sell those assets, you're going to buy Pakistani rupiah from the market. It is going to maintain our value. But the problem क्या हो गई कि हमारे resources कम हो रहे हैं, reserves कम हो रहे हैं, which will might be a problem in the future. But China के case में they have a balance of payment surplus. They have more inflows than outflows because they trade and they sell to the world. So their currency's demand is more than their supply, right? The international market में उनकी demand ज़्यादा है, which is making their value stronger, but they don't want their currency to go up. You remember हमारा जो macroeconomic objective होता है, that is you want a stable balance of payment. You want stabilities in your inflows and outflows because you don't want uncertainties. क्या होगा चाइना के केस के अंदर? They built an economy on export. Their job is to export their factories and employment is all based on exports. अब अगर डिमांड ज्यादा होने की वजह से चाइनीज करेंसी becomes more up in value, their exports will get hurt. And that's the problem for them, right? तो उनको क्या करना पड़ता है? They have to sell their own currency. They want to increase their own currency in the foreign exchange market. So what they do is they take all that demand of inflow of money that is coming in, they go and they buy these reserved assets. तो उनके पास एसेट्स जमा हो जाते हैं, अब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट्स एंड गोल्ड जमा हो जाते हैं उनके पास. So this is how they sort of like balance of their balance of payment. We're going beyond our course right now, but पुराने एमसीक्यूज के अंदर this was expected कि आपको करना आना चाहिए कि फॉरेन करेंसीज के साथ किस तरीके से आप अपनी करेंसी की वैल्यू को मेंटेन कर सकते हैं. सही. So you won't be needing this information, but just general knowledge. This is how things work. So बात यह है कि सरप्लस होता है, डेफिसिट होता है. पाकिस्तान के केस के अंदर we're always looking for a surplus. We try to get a surplus. Okay, ये हमारी कोशिश होती है कि हम सरप्लस कर सकें, क्योंकि हमारे को कुछ नीड्स हैं, हमारी कुछ नीड्स हैं जिसके थ्रू हम सरप्लसेस रिक्वायर करते हैं.
बेसिकली होता क्या है, व्हाई डू वी नीड अ सरप्लस? तो अभी हमने चाइना के केस में देखा, व्हेन यू हैव अ सरप्लस, ओके, सो सरप्लस कैन help us buy reserve assets। पहली बात, तो मैं क्या करूं अगर हमारे पास गोल्ड आ जाए और हम गोल्ड खरीद के रख लें उस सरप्लस से? तो फायदा क्या है, रिजर्व रखने का क्या फायदा है? तो हम कह रहे हैं जी, होगा ये कि जब हमारे पास ये रिजर्व एसेट्स होंगे ना, तो व्हाट वी कैन डू इज, इट कैन बी यूज्ड, सॉरी, इट कैन बी यूज्ड टू फाइनेंस फ्यूचर डेफिसिट। जैसे पूरा सीपैक का प्रोजेक्ट चाइना ने क्या किया, सरप्लसेस कर रही थी ट्रेड में, उससे उन्होंने डॉलर्स खरीद लिए ताकि उनकी करेंसी वीक ना हो। फिर उनके पास बहुत सारे जब डॉलर्स जमा हो गए, तो दे डिसाइडेड कि चलें जी, अब हम थोड़ा सीपैक में भी इन्वेस्ट करते हैं, हम ईस्टर्न यूरोपियन मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, हम अफ्रीका में भी इन्वेस्ट करते हैं फॉर आवर फ्यूचर, राइट? सो दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग, सरप्लस कैन रियली हेल्प यू विद दैट। इसके अलावा सरप्लस से क्या होता है, समटाइम्स यू माइट फील कि अगर हमारे पास सरप्लस होंगे ना, तो सरप्लस क्या कर सकता है, सरप्लस कैन अप्रिशिएट आवर करेंसी इफ यूर इनटू दैट, कि आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो जाए। ठीक है, अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ करेंसी। तो इससे क्या होगा, um, एक तो नंबर वन, इंपोर्ट्स विल बिकम चीप। इंपोर्ट्स विल बिकम चीप, एंड साथ में जो डेट्स हैं आपके पास, वो कम हो जाएंगे। तो आपके डेट्स सस्ते हो जाएंगे ना, बिकॉज आपकी करेंसी जब स्ट्रांग हो गई, नाउ इट्स इजियर फॉर यू टू पे दोज लोन्स बैक। अगर कंसिडरेबली आपके पास ज्यादा अच्छी वो हो जाती है, करेंसी अच्छी से वैल्यू ऊपर चली जाती है, तो फिर दैट वुड बी अ पॉजिटिव थिंग। ठीक है, उसके अलावा क्या कर सकते हो, रिजर्व, आई थिंक ये रिपीट हो रहा है, रिजर्व कैन बी यूज्ड टू फाइनेंस imports एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली सरप्लस इज अ हेल्पफुल थिंग। इनफैक्ट जो सरप्लस है, जो आपके फ्यूचर, खासतौर पे यू रिमेम्बर अभी हमने किया था सिक्लिकल डेफिसिट, कि अगर आपके पास कोई सिक्लिकल डेफिसिट का प्रॉब्लम है, तो सरप्लस विल रियली हेल्प यू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दो सिक्लिकल डेफिसिट। ठीक है, तो सरप्लस के हमने कुछ एडवांटेजेस मेंशन कर दिए कि ये चीजें हैं जो सरप्लसेस को वर्क कर सकती हैं, लेकिन ऑब्वियसली सरप्लस हैज इट्स प्रॉब्लम एज वेल। सरप्लस का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन सी ट्रम्प के केस के अंदर, ट्रम्प को क्या इशू है कि यूएसए हैज अ डेफिसिट विद ऑल द कंट्रीज, चाइना, इंडिया, एंड यू नेम इट, वी हैव अ डेफिसिट विद दीज कंट्रीज। So when you have a deficit, the Americans are thinking more of our currency is going abroad than coming in, and that's weakening the dollar's power globally. And that's not a very positive thing for an economy. Why are they not buying stuff from us? So it's sort of like it's an embarrassing, I think they say that it's an embarrassing situation from the trading partners' point of view, and they then retaliate, right? And it's a thing that we're seeing, right? A persistent, तो मैं कह रहा हूं असल में जो सरप्लस प्रॉब्लम है, एक persistent surplus इज अ प्रॉब्लम। तो persistent surplus में embarrass trading partners and may force them to retaliate, okay?
एंड ट्रेड वॉर होने के इसकी वजह से चांसेस होते हैं, तो दैट्स अ प्रॉब्लमैटिक थिंग। फिर उसके बाद अगर आपके पास सरप्लस हो रहा है, दैट मीन्स यू आर एक्सपोर्टिंग मोर। तो उससे क्या हो सकता है, सरप्लस ड्यू टू राइजिंग एक्सपोर्ट can cause demand pull inflation because CIGX minus M. So if X is going up, so obviously that will cause a demand pull inflation to occur. फिर उसके बाद हम एक प्रॉब्लम ये भी बोलते हैं, यू नो हाउ वी वर बिल्डिंग अप रिजर्व्स, surplus used to buy reserve has an opportunity cost as country is foregoing imports. तो आपने क्या किया, सरप्लस के बदले में डॉलर और गोल्ड खरीद लिया। यू कुड हैव इवन लाइक बॉट goods and services for your average Pakistani, and they would be able to buy more goods and services and their living standard would improve. But you decided that nahi, we don't want to go that way. What we want to do is we want to keep reserves in hand. And remember, वक्त के साथ जब चीजें महंगी होती जाती हैं तो तुम्हारी रिजर्व्स की वैल्यूज भी गिरना शुरू हो जाती हैं, राइट? तो ऑब्वियसली फिर हम कहते हैं कि दैट इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव थिंग, एंड स्पेशली अगर आपके पास रिजर्व्स बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाएं तो दैट वुड डेफिनेटली बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो ये हमारी एक बात हो गई कि सरप्लस में फायदा भी है, लेकिन सरप्लस में नुकसान भी है। ऑन द अदर हैंड, what is the balance of payment deficit? Very simple. Your inflows are less, your outflows are more. You are exporting less, you are importing more. Why are countries like, why do countries undertake deficit? You know, so basically, this deficit may occur. Why deficit may occur if the residents consumes more than production. We've talked about this just a while back. तो एक तो ये वजह है। दूसरा, कभी कभार आपके पास जो डेफिसिट होता है वो इसलिए होता है, जैसे अभी हमने बोला ना कि आपकी जब इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है तो you might have to buy capital equipment and raw material, right? तो यह आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है। तो for some economies, that's what they want to do. सही है। So deficit um, could be due to finance, capital expenditure, which will which will finance future economic growth। ठीक, एक ये भी वजह हो सकती है। So would it be a problem? Not a problem? तो हम कहते हैं cyclical deficit is not considered a problem, is not considered a problem, right? Because you know कि ये ठीक हो जाएगा, जैसी टेम्पररी है, it's short term,
It's gonna get fixed. फिर उसके बाद even we might not consider it as a problem if it is a small percentage of GDP, then it's not a Sir, problem. ये Yeah. point पर भी समझना point पर भी जो लिखा है Which one? point one पर यार पॉइंट 1 तो सिंपली ये बता रहा है कि ये डेफिसिट होता क्यों है. सो वी आर सेइंग व्हाई डू वी हैव अ डेफिसिट, व्हाट इज अ डेफिसिट, व्हाई डू कंट्रीज अंडरटेक डेफिसिट समटाइम्स. So point number 1 is just telling us that you might have a deficit because the country is producing lesser goods, and the country needs to consume more goods and services comparatively. Pakistan's case, right? We're consuming more than what we are producing, so we have a deficit, right? So हम उस point of view से कह रहे हैं कि sometimes countries need to consume more stuff than what they can produce. Sometimes it's just a necessary requirement because you have a very large population and you don't have a proper production capacity. तो फिर you have to undertake those sort of deficits. तो ये sort of मैं बता रहा हूँ कि countries जो deficit ले भी रही हैं, these would not be considered a problem. अगर आपकी जीडीपी का एक छोटा सा हिस्सा है, it's not a problem. You can finance it easily with your GDP. And अगर capital goods के लिए अगर आप deficit ले रहे हैं, तो that's a very positive thing. In fact, short run में more money might be going out, but long run के अंदर when these goods will be used to manufacture other goods and services for export purposes, so that would be considered a very, very positive thing. Okay. But the last thing is under तो what सर circumstance. एक सेकंड सर ये वो जो पॉइंट छह में ये जो तीसरा अल्फाज लिखे हैं मतलब समझ भी नहीं आ रहा इसमें मतलब जो पॉइंट ही मतलब समझ समझ नहीं आ रहा कैसे लिखना ये जो तीसरा अल्फाज लिखा है Cyclical deficit is not considered a problem. Cyclical deficit अभी हमने नहीं नहीं पीछे वो बात. पॉइंट वन में uh, जो थर्ड थर्ड वर्ड है ना ये थर्ड वर्ड deficit may occur if the country consumes more than production. हो गया Okay. राइट. सो उसके बाद जब हम फर्दर और आगे डिस्कशन को लेके जाते हैं, तो इसे व्हाट आर द प्रॉब्लम. डेफिसिट को हम प्रॉब्लम क्यों कंसिडर करते हैं? यूजुअली वी कंसिडर इट अ प्रॉब्लम. पाकिस्तान के केस में तो ऑब्वियसली वी डू. सो देखो जी, छोटा डेफिसिट इज नॉट अ प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम कम्स व्हेन यू हैव um, a large percentage of GDP वाला deficit. Large percentage of GDP, sorry, I think we should write deficit, which is large percentage of GDP. Deficit that is large percentage of GDP is considered a problem. Why? Because it needs to be financed with loans on which interest has to be paid. तो बेसिकली मुल्क के ऊपर ज्यादा कर्जा हो जाएगा. तो दैट्स अ प्रॉब्लम. द लार्जर द परसेंटेज इट इज, द मोर लोन्स यू आर गोइंग टू टेक, द मोर इंटरेस्ट यू विल हैव टू पे. यू माइट गो इनटू अ डेट ट्रैप. तो दैट माइट बी कंसिडर्ड एन इशू. फिर ये भी हो सकता है कि डेफिसिट कैन लीड टू वीकनिंग ऑफ द करेंसी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर. उसकी वजह से क्या होगा, जो लोन्स तुम्हारे ऊपर हैं वो और बड़ी वैल्यू के हो जाएंगे. बिकॉज योर करेंसी हैज वीकेंड. उन्होंने आपको डॉलर्स में दिए थे, आपने उनको डॉलर्स में पेमेंट करनी है. अब डॉलर स्ट्रांग हो गया है, तो अब ज्यादा रुपये की जरूरत है टू पे ऑफ योर लोन्स, एंड दैट कैन बी कंसिडर्ड
प्रॉब्लम। अगर आप करेंसी को वीक नहीं होने देते हो तो फिर आपको रिजर्व बेचने पड़ते हैं, दैट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम। यू माइट रन आउट ऑफ दोज। ठीक है, so that's what we're suggesting. Sometimes we say कि जी डेफिसिट वुड बी अ प्रॉब्लम, कि कंट्री जो डेफिसिट ले रही है, डेफिसिट इज टेकन मेनली फॉर कंज्यूमर गुड। अभी हमने कहा था कैपिटल गुड्स के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर तुम कंज्यूमर गुड्स के लिए लोन्स उठा रहे हो और डेफिसिट ले रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अपनी पर्सनल यूज के लिए आप घड़ियां खरीदते हो, बाहर से आप खाने पीने की चीजें मंगाते हो, तो प्रॉब्लम क्या है? यू स्पेंड द मनी, दोज important reserves of a foreign currency, to buy wheat. व्हीट पाकिस्तानी इकोनॉमी में आती है एंड पीपल कंज्यूम इट, पैसे खर्च हो गए। कैपिटल में क्या होता है कि आपने वो पैसे खर्च किए मशीन्स मंगाने में, अब मशीन्स इनपुट जनरेट करेंगी, which can be sold, output generate करेंगी, income generate करेंगी, which can be sold abroad, and so it pay for itself. व्हीट के लिए पैसे खर्च करना और उसको कंज्यूम कर देना, एंड दैट्स गॉन, देयर इज नो न्यू इनकम बीइंग जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम पाकिस्तान के अंदर भी लेट्स से चॉकलेट्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फिर हम उसी ब्रांड की डेयरी मिल्क पाकिस्तान में भी बनाते हैं और फिर हम उसी ब्रांड की इंपोर्टेड भी मंगा लेते हैं और वो भी कंज्यूम कर लेते हैं, तो इम्पोर्टेड तो में तो क्या हुआ कि जो भाई आपके पास लोकली प्रोड्यूस्ड डेयरी मिल्क थी उसी को कंज्यूम करना चाहिए था आपको, तो पैसे भी बच जाते, बाहर भी नहीं जाते। बट आपने इम्पोर्टेड डेयरी मिल्क बिला वजह कंज्यूम करके जो है अपनी इकोनॉमी के ऊपर और स्ट्रेस डाल दिया है बेसिकली, right? So the money is going out. So this is what, again, it's about the size of the deficit and the surpluses, which can be considered problem. It could be the use for which you're having a surplus or a deficit, temporary versus long term. These will be the required discussions that you will have to make in this chapter. So please make sure that you read this chapter once. You can use the books or anything. But that sort of like concludes our current account discussion for now. If you have any questions, please make sure that you ask me.